Studying about the IMF and the Structured Adjustment Program in Pakistan, we studied its history and the objective of the program and the keys areas in which the IMF and with the help of our government has to intervene. The objective or the targets of this 3-year period program was to reduce the overall budget deficit, contain or reduce the rate of inflation to 10% to 7%, reduce the external current account deficit to 3.4% of the GDP, and further in 1989 to 90 to 2.8% and then to the 2.6% in the third year of the program, and reduce the civilian external debt service ratio from 27 to 28% to less than 22%, and increase the gross official foreign exchange reserves from the equivalent of about 3 weeks of merchandise import at end of 1987 to a safer level of about 7 weeks of import by 1990. मीन कि आपके पास जो फॉरेन रिजर्व है पहले आप इतने अपने पास रखते हैं कि 3 मंथ की इंपोर्ट्स के लिए आप पे कर सकें, तो आप कम से कम आप इतने मेंटेन करें कि आपके पास अपनी 7 मंथ की इंपोर्ट्स के लिए हो, and decrease the growth of domestic credit and money supply in line with the growth of nominal GDP ताकि आपका जो inflation rate का target है उसे भी achieve कर सकें, and consistent with the macroeconomic adjustment sustain real GDP growth with at about 5.2% in 1988 and 5.5% in 1989. And keys area for the intervention were the fiscal policy, trade and financial sector. So now we will see about this, the program was a successful or it was a failure. So to determine the extent of the success, we will identify the program target and then examine whether those targets were achieved or not. The targets were, as we have revised just now, that GDP growth rate at least to maintain 5.5% or above for the each year of the program, increase the investment and improve its efficiency. Deregulation mean government intervention should be decreased and the जो इदारे आपने नेशनलाइज उनको अगर वो प्रॉफिट भी नहीं दे रहे तो आप उनको प्राइवेटाइज कर दें और आप ट्रेड में इंटरवीन ना करें, ट्रेड रिस्ट्रिक्शन शुड बी डिक्रीज, एडजस्टमेंट इन एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस के जो स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए प्रोक्योरमेंट प्राइसेस होती हैं उनको एडजस्ट किया जाए, एंड बेटर फिजिकल एफर्ट्स. अगर हम देखें फिजिकल पॉलिसी एरिया तो इम्प्लीमेंटेशन वाज द वीकेस्ट इन दिस एरिया. टैक्स रेवेन्यू एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी रिमेन स्टैग्नेंट, क्योंकि एक पर्पस फिजिकल एरिया में ये था कि टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन विल बी इंक्रीज्ड. जो टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज करने के स्टेप्स लिए गए वो थे न्यूमरस इनकम एंड द वेल्थ टैक्स एग्जम्पशंस वर रिड्यूस्ड, के जो छूट दी हुई थी टैक्सेस में, वेल्थ टैक्सेस में या इनकम पे, उनको खत्म किया गया. सिंप्लीफिकेशन एंड रैशनलाइजेशन ऑफ द टैक्स स्ट्रक्चर एंड अटेम्प्ट्स वर मेड टू इम्प्रूव द टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, बट actual results were number of the taxpayer and the coverage remained low, and 121 community categories exempted from the general sales tax. So progress in reducing concession remained limited. Then there was a trade and the balance of the payment mean the current account deficit, it was declined. Stepwise reduction in the maximum tariff rates were made, and there were the many non-tariff trade barriers like quotas which were eliminated. Import license पहले दिए जाते थे, they were finished. Import abolished, import license जो उनसे हैं उनकी ज़रूरत नहीं है imports और exports के लिए. Exports increased by 11.5%. लेकिन जो services balance था वो deteriorate हुआ. But noticeable increase in foreign direct investment and the foreign portfolio investment due to the foreign currency account. So current account deficit होता है, उसके 3 component होते हैं. एक services area होता है, एक import exports का, और एक जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. तो इसमें चूंकि एक्सपोर्ट्स भी इंक्रीज हुई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी, तो ओवरऑल जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो डिक्रीज हुआ फॉर द टाइम पीरियड. फाइनेंशियल सेक्टर में रेजिडेंट पाकिस्तानीज वर अलाउड टू ओपन द फॉरेन करेंसी अकाउंट, जो बाद में 1998 में खत्म कर दिए गए. बैंक्स वर ऑथराइज्ड टू इंक्रीज इंटरेस्ट रेट्स ऑन डिपॉजिट्स. बैंक को अथॉरिटी दी गई कि जो डिपॉजिट्स हैं वो इन पे इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज कर सकते हैं.
or Muslim Commercial Bank and allied banks were sold to the private sector, and 10 new private sector commercial banks and 8 investment banks were sanctioned. Increased activity and capitalization in stock market was observed during the period. Rate of return on treasury bills of the government was increased from 6 to 13%. Then there was the liberalization and the privatization, a forceful program of liberalizing the economy from the government control was undertaken. Power generation, commercial and investment banking, and air and sea transport was open to the private sector. In sectors में पहले सिर्फ government investment कर सकती थी. Then sanctioning of the private investment was abolished कि private investment करने के लिए आपको sanction या मंजूरी करवाने की या मंजूरी लेने की ज़रूरत नहीं है. Regulatory restrictions abolished. Registration of technical and the foreign loan or the procedure for the employment of the foreign workers were abolished. ये restrictions भी खत्म कर दी गई. Other areas, for example, there was the agriculture. Performance of the agriculture sector, especially in the cotton, improved very much, and subsidies on the pesticide, seeds, and the agriculture machineries were eliminated, and the prices of the fertilizer were adjusted upward. Industry value added was increased by 6.3% and large investment undertaken in all major energy sources. Cotton industries were dominated. As we can see, the textile sector is still dominated sector of the Pakistan industry. Domestic saving increased, especially for the foreign currency deposits. Energy prices increased by an average of the 4% in real terms. World Bank की प्रोग्राम के बारे में अपनी क्या ओपिनियन थी कि while performance during the adjustment period has been strong in GDP and export growth and in structural reforms to encourage the private sector economic activity, it has been weaker in achieving the sustained reduction in the fiscal deficit and in improving external sector balances. Lack of significant improvement in the poverty and the social sector mean कि poverty या social sectors में कोई improvement नहीं आया, बाकी GDP growth maintain रही, लेकिन फिजिकल सेक्टर में डेफिसिट में भी यानी गवर्नमेंट के बजट डेफिसिट में भी इम्प्रूवमेंट नहीं थी. वर्ल्ड बैंक एंड IMF इवैल्यूएशन ऑफ द 1988 स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम. मतलब 4 की इंडिकेटर थे विच रिफ्लेक्ट द स्टेट ऑफ एन इकोनॉमी. जीडीपी ग्रोथ रेट है, बजट डेफिसिट एज परसेंटेज ऑफ द जीडीपी, करंट अकाउंट डेफिसिट टू जीडीपी रेशियो एंड द इन्फ्लेशन रेट. द लेटर 3 इंडिकेटर्स वर वे ऑफ फ्रॉम टारगेट. मतलब जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम के जो टारगेट थे, अगर हम उसे जरा न्यूट्रल होके एवेल्युएट करें स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम को, तो ये जो तीनों इंडिकेटर हैं, बजट डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, इन्फ्लेशन रेट, जो टारगेट था ये उससे से काफ़ी दूर थे. ऑफ 1988 हैज़ नॉट बीन मच ऑफ द सक्सेस. अगर इस तरह से आपको इसको ऑब्जर्व करें तो ये कोई इतना सक्सेसफुल प्रोग्राम नहीं था. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू विलियम मैकलेरी, he was from the World Bank, that Pakistan economy was doing well for itself. The structural adjustment program शुरू होने से पहले भी पाकिस्तान की इकोनॉमी खुद भी 5 से above growth rate maintain किया हुआ था. And second is that before the intervention of the IMF, Pakistan economy did well because the condition imposed on it were being followed and because the government of Pakistan was thinking like the IMF. The IMF and the World Bank policies were sound and things went bad because of the poor management of the government. Lekin according to IMF Mohsin Khan, the changes that have been made as far as openness and outward orientation are concerned have been marginal. Saving and investment were off targets, large fiscal deficit remained as it is, and efforts at resource mobilizations were not successful. Microeconomic effect देखें तो impact was severe, particularly on the labor and the poor segment of the society. General sales tax and the subsequent inflation hurt the poor. Cuts in government hiring to release the pressure on the government expenditure increased the unemployment in the society. Poverty returned to the Pakistan following the IMF program. Low GDP growth, its sectoral distribution, lower employment, and real wages, cuts in public expenditure and in social development. ये सारी चीज़ें मिलके ज़रा इफेक्ट किस चीज़ पे डालेंगी कि आप जनरल सेल्स टैक्स पे बढ़ा देते हैं, आप पब्लिक सेक्टर की एक्सपेंडिचर कम कर देते हैं, सोशल डेवलपमेंट में भी आप अपने
एक्सपेंडिचर कम करते हैं, एम्प्लॉयमेंट आपकी कम है, रियल वेजेस आप बढ़ने नहीं दे रहे, तो जाहिर है कि पुअर सेक्टर जो सोसाइटी का वो सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा। Next is, are our government autonomous? Are they are working for the IMF and the World Bank? We will see it tomorrow. You may ask any question.